Let's wait for 2-3 minutes more. We are 66 of us here. Just Yes, ma'am. Good morning. yeah, good morning. Let's wait for just 2-3 minutes more before we start. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Okay, I think it's 11:47, and I think we'll start now. We are around 82 of us, and if others are not able to connect, they can join subsequently. And so good morning to all of you. Yesterday, we had been talking, we had actually started what are the functions of classroom discourse, right? And that is the second topic in the unit on classroom discourse. और तो कल हमने जो फंक्शन को डिस्कस किया था, क्या फंक्शन था? Anyone would like to just quickly summarize what we did yesterday, so we can, start from there. So we said कि classroom discourse बहुत important है, and especially teachers के लिए classroom में.
And अगर learning has to happen and अगर teaching learning process को हमें effective बनाना है, तो without classroom discourse, it is not possible. And so we said that all interactions till now, what we have discussed is that classroom में जितना भी interactions होता है, communicative exchanges होता है, discussions होता है, explanations होता है, क्वेश्चन आंसर्स होता है, किसी भी कॉन्वर्सेशन होता है, टॉक होता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ भी हम क्लासरूम में जो भी टाइप का इंटरैक्शन होता है, दैट इज क्लासरूम डिस्कोर्स, और वो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टिल नाउ आई थिंक इफ आई समराइज, दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग. और क्लासरूम डिस्कोर्स का जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, यू कैन से टीचर्स ये बोल सकती हैं कि फंक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है, हम तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, एंड स्टूडेंट्स विल लर्न. There could be an counter argument, ऐसा हो सकता है, but that's not possible. Please remember that without a classroom discourse, learning, remember, will not happen. Okay, so this is what we were discussing yesterday, कि अगर classroom discourse इतना ही important है, इतना ही important है, तो what are its functions, specific functions क्या है, particularly अब general से हम particular पे आते हैं कि particular उसके क्या functions हैं. तो कल हमने जो एक function की बात की थी, I remember I had started. So what was that function that we talked about yesterday? Anyone would like to contribute before I start the second? Ma'am, classroom. One by one, yes. Who's talking? Ma'am, Preeti. Ma'am, Kruti here. हाँ बोलिए प्लीज. हाँ बोलिए. Ma'am, classroom discourse, it helps students to practice their reasoning and thinking skills. Mm-hmm. Then Yes. Ma'am, Deepak. Ma'am, here. Yes, Deepak. Okay, thank you, Kruti. Yes, a thinking and reasoning skill. Yes, Deepak Mishra. Yes. Ma'am, classroom discourse helps students to think critical thinking, encourage critical thinking. Very good. Critical thinking. So हम यहाँ पे कल जो हमने बात किया था. Okay, anyone else before I will summarize? Anyone else would like to say something else? Yes. Ma'am, it also helps in acquiring subject knowledge. Wonderful. Subject knowledge. Okay. True deep thinking. Yes. Anyone else? Yes, Ma'am, it also need Preeti Sharma. हाँ बोलिए. ma'am, it's also need regular and frequent opportunity to express it. Yes, the teachers have to give that. Yes, opportunity. Okay, Preeti, आप कुछ बोल रही हैं क्या? Ma'am, मैंने ही ये बोला actually. अच्छा, sorry. Okay. Okay. So I think you all have very well, summarized the first point that we had talked about yesterday. That firstly, teachers have to give opportunities to develop thinking and reasoning skills. Okay, और जब तक ये opportunity classroom discourse में नहीं मिलेगा, classroom interaction में नहीं मिलेगा, classroom के teaching learning process में नहीं मिलेगा, remember that thinking skills will not get developed, and जब हम thinking skills की बात करते हैं, हम analytical thinking की बात करते हैं, हम कोई subject को, किसी topic को, उसको हम analyze कैसे करें, हम critical thinking की बात करते हैं कि हम I was giving you examples कि fact क्या है, opinion क्या है, जो statements हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं. Okay, so this is all you are doing critical thinking. So आप देख रहे हैं कि वो क्या है. So reasoning, what are the reasons, अगर कोई society में कोई problem चल रहा है, what are the reasons for that? If today during COVID times, let me say that if economy has
gone down, and you know, factories have closed down, jobs have got lost. So what are the reasons and how can we improve upon that? और इस economy को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? So you reason it out, you know, and find out कि solutions क्या है. So all this thinking, reasoning, finding solutions to problem solving, you know, all comes under this point that we have been discussing. And this is very, very important. Now, let me tell you that I don't know आप लोग में कितने लोग ने National Education Policy 2020 पढ़ा है. Any one of you have read the 64-page document जिसकी पूरी चर्चा पूरी देश में हो रही है, and पूरा changes लाने की बात हो रही है school system में, teacher education में, higher education में. आप लोग, now we are there are 86 students present here. So who has read the National Education Policy 2020? Online document is available, online PDF document is available. किसी ने पढ़ा है? Do you know what is this National Education Policy 2020? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है? क्या है भाई ये? What is this? Hello, ma'am. हाँ, बोलिए बोलिए. Ma'am. MPhil degree has been like not valid now. Okay. Higher education में, लेकिन हाँ, okay, fine. No, I want you to tell me more about school education, because you are all would be teachers. Tell me more about school education. Mother tongue. What changes, you know, have been recommended in this National Policy of Education 2020? Tell me. Yeah. Yes, ma'am. Emphasis is laid on mother tongue. Yes. Medium of Yes, medium of instruction, mother tongue wherever possible, and classical languages like Sanskrit, Telugu, Kannada, Odia, you know, from 6 to 12, craft education. So बहुत important point, maybe सब नए नहीं हैं. If you analyze, पहले भी policies ने इनकी बात की है. So I would not really say that they are very new, but उस पे बहुत emphasize किया गया है दोबारा कि you know vocationalization of education ये सब पे. But एक important point है which I am trying to link with my classroom discourse. What is that? वैसे तो बहुत चीज की चर्चा या डिस्कशन की गई है, लेकिन what is that I'm trying to link with, you know, classroom discourse, because that is the subject of our discussion. Yes, Deepak Mishra. And multiple entry and multiple exit. हाँ, वो तो हायर एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं. Vocationalization. Since last. Ma'am, 5+3+. No, what am I trying to link with? 1 minute, listen to my question, please. What is that I'm trying to link with, you know, classroom discourse? Ma'am, the new education policy aims to broaden the analytical skills, critical thinking, scientific aptitude. It is putting more emphasis on skill development as compared to the earlier policies. Yeah. So see, again, you know, again I'm saying कि कोई नया नहीं है, बहुत policies ने इसकी बात की है. You know, it is not something that it is very, very new. No. शुरू से हमारी कोशिश school education की ये रही है कि हम students में कैसे हम, you know, thinking skills को develop करें. But again, this national policy. हाँ, बोलिए. Ma'am, here Digital India and Digital India will be given to the more point towards it. Yeah, digital education. Yes. Digital libraries and digital content, pedagogy and classrooms. Yeah, so that is also a very important part, that, you know, online education, digital skills, digital literacy, ये सब पे बहुत importance दिया गया है. But the point I'm connecting with my reasoning and thinking skill is that, you know, they have said that pedagogy या methodology of teaching discussion method होना चाहिए, problem solving method होना चाहिए, जिससे, you know, reasoning and thinking skills develop ho. So even national education policy is talking about, you know, critical thinking skill. One of you just now said, you know, analytical thinking skills, critical thinking skills, and pedagogy teachers
ऐसे अडॉप्ट करें क्लास में जिससे ये स्किल्स डेवलप हो. So see, when you adopt a methodology, let's say problem solving method है, discussion method है, project method है, you know, all these methods, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड है. सो आप जो भी मेथड अडॉप्ट क्लास में करते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू नो क्वेश्चनिंग ऐसा हो कि स्किल्स डेवलप हो. और क्लासरूम डिस्कोर्स में क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच आई एम गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग्स कैन वी डू जिससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू नो रीजनिंग स्किल, थिंकिंग स्किल डेवलप हो. सो questioning skill, remember, is a very important feature of classroom discourse, which we shall talk, you know, that is the next topic, which we shall talk later. So यहाँ तक हमें ये समझना है कि even National Education Policy 2020 ने reasoning and thinking skills पे बहुत जोर दिया है, and therefore in our classroom discourse, you know, इसका importance बहुत ज़्यादा है. पहले भी था, आई एम नॉट सेइंग कि पहले नहीं था. अगर आप पहले भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो यू नो करिकुलम फ्रेमवर्क्स 2000, 2005, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, यू नो इट इज देयर. बट अब बहुत इस पे और जोर दिया गया है, एम्फेसिस दिया गया है. नाउ आई कम ऑन टू द सेकंड पॉइंट of my functions of classroom discourse. So this point is clear to everybody, reasoning and thinking? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Everyone? Yes, ma'am. It's clear to Yes, everybody, the first function? Yes, ma'am. Students to practice reasoning and thinking skills. It's clear? Okay. Now we Yes, come ma'am. on. Okay. Now we come on to the next function. Okay. Next function is improving language skills. Okay, this you can note down. Improving language skills. Okay, this is the second function of classroom discourse. Okay, improving language skills. Now see, naturally, when you give opportunities to students, you know, to engage in discussion, so language proficiency जो है वो naturally improve होगा. So there is no doubt about it that language proficiency is going to improve because you are giving so much of opportunity to students to do that. यहाँ पे a teacher एक facilitator है, you know, so that is what you have to keep in mind here. So this discussion becomes very, very valuable, and you're giving opportunities to students for academic discussion. So आप students को आप chance दे रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं कि classroom में academic discussion हो. So जो language skills है वो reading है, writing है, listening है, speaking है, you know. So and यहाँ पे especially listening and speaking, क्योंकि हम oral discourse की ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं, would naturally improve. Listening and speaking skills जो है would naturally is going to improve. Now, one thing you have to keep in mind here, that opportunity जो हम students को देते हैं, you know, the teacher speaks in his or her own language, own thoughts, own idea, and own accent, you know. But this is not what we want the students to learn. So what should the students do to learn the language is my question to you. Yes. Because teacher का language वो किसी और का language है. ठीक है ना, जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ, इफ आई एम द टीचर, वो मेरा लैंग्वेज है, वो मेरे थॉट्स हैं, वो मेरे आइडियाज हैं, ये मेरा एक्सेंट है. लेकिन अगर आपको मुझे लैंग्वेज यू नो सिखाना है या प्रोफिशिएंसी सिखाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का लैंग्वेज, यू नो, because every subject you have learned has its own words, has its own language, has its own technical words. Okay, has its own words that are being used. तो अगर उस subject का language हमें सिखाना है, so what should the teachers do? Yes. Because I'm saying
जो आप अगर 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 आप एक टीचर हैं तो आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपके शब्द, आपके एक्सेंट से क्या उस सब्जेक्ट में आपके लर्नर्स लैंग्वेज सीख पाएंगे कि नहीं? पहले इसका जवाब दीजिए, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm saying आपके, please listen to the question actually. Don't say yes without understanding the question. I said आप एक क्लास में हैं, okay? एंड आप बोलते हैं एंड वो आपके आइडियाज हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके शब्द हैं, आपके वर्ड्स हैं, आपका आपका सब कुछ है। सो इससे क्या लर्नर्स को प्रैक्टिस मिलेगा वो सीखने का? यू आर स्पीकिंग, आई एम सेइंग yes. No, ma'am. I'm saying you are speaking. No, ma'am. Yes or no? No. No, ma'am. No, ma'am. What do you think? Think and tell No, me. ma'am. No. डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए। नहीं मिलेगा। डेमोक्रेटिक व्यूज। And यही Ma'am, because गलती, हाँ, themselves. हाँ, what are you saying? Yes. What are you saying? Ma'am, because they are trained by themselves to develop their not by them. So see, और यही गलती हम सब लोग कर बैठते हैं। The teacher keeps on speaking, you know, and वो अपने बातों में इतना एक टीचर खो जाता है, इतना इन्वॉल्व हो जाता है, वो भूल जाता है कि अगर हम बच्चों को मौका ना दें और अगर बच्चे सी टू लर्न एनी लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट, ओके, आई एम सेइंग एनी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट का अपना लैंग्वेज है, अपने शब्द हैं, अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं, यू नो, अपना तरीका है। ओके, सो हर सब्जेक्ट में बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है। Okay, it is not only, again I'm telling you, it is not only in the English class or the Hindi class or the Gujarati class. The first unit has already emphasized on this कि हर subject में बच्चा language सीखता है, okay, और उस subject का language सीखता है। So as a teacher, हर subject में you have to give, you know, opportunity to the students to express themselves in their own words, their own ideas, their own thoughts and their own accent, you know, which of course you can improve upon that. So that is very, very important. But actually what is happening is an example that I'm going to give you, and I've got a very good example for you, and you will I'll just read it out from here, and you note down what the teacher is saying, and you note down what the student is saying, and then I'm going to ask you my question. Okay? Or even if, okay, you may not have time to note down, but listen carefully and you will get an idea. Okay, this is a conversation, a question answer, a discourse that is happening between a teacher and a student. And you're going to tell me that, you know, how helpful was this classroom discourse? Kitna helpful tha ye classroom discourse? So are you ready? Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ध्यान से सुनिए। Teacher बोलती है, I was thinking about the life cycle of an insect. Okay, do you remember the life cycle we studied? क्लास में पूछ रही है। We studied, you know, Sunita, मान लीजिए सुनीता नाम है, you know. So life cycle of an insect, एक insect का कैसे एक इंसेक्ट का बर्थ होता है, यू नो, जो बायोलॉजी में यहाँ पे है, जो साइंस में है, एंड इवन एवरीबडी, नॉट ओनली दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई हैव टेकन, जो आई थिंक क्लास 5th या क्लास 6th में हम सब ने पढ़ा है इसको, कि यू नो बटरफ्लाई कैसे निकलता है, एक इंसेक्ट कैसे निकलता है, यू नो क्या होता है, तो हम सब ने ये स्कूल में पढ़ा है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ वेरी वेरी सिंपल, एक सिंपल एग्जांपल है, सिंपल उदाहरण है। ओके, सो the teacher says, I was thinking about the life cycle of an insect. मैं सोच रही थी कि अगर एक इंसेक्ट, एक कीड़ा है, तो उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो do you remember सुनीता? सुनीता बोलती है yes. Okay, so जो students बोल रहे हैं, you just note down that, you know, maybe that will give you an idea if you don't have time to note down the whole thing. Okay, so तो सुनीता बोलती है yes.
Teacher again. What was the first stage in the life cycle? Anil दूसरे स्टूडेंट से पूछती है, अच्छा लाइफ साइकिल एक कीड़ा या एक इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है, टेल मी द फर्स्ट स्टेज, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज? ओके, then Anita says, they were born, these three words वो बोलती है, I think they were born, उनका जन्म होता है. She's asking, Anita is asking, अच्छा क्या उनका जन्म होता है? Okay. Teacher, now listen to this. Yes, things are born, but what is the life cycle of an insect? Okay, let's try to be a little more specific in our thinking. लेकिन इंसेक्ट का क्या लाइफ साइकिल है? लेट्स बी थोड़ा स्पेसिफिक होके सोचिए कि अगर एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, उसका लाइफ साइकिल में क्या होता है? What is the first stage in the insect life cycle? Kalyani, she asked the third student को वो पूछती है, अच्छा first stage, what is the first stage in the life cycle of the student? Kalyani बोलती है, eggs, कोई भी जो है कीड़ा, जो एग्स या अंडे से उनका बर्थ होता है, उनका साइकिल चलता है. सो कल्याणी सेज दैट. देन टीचर बोलती है, यस इंसेक्ट्स स्टार्ट विद एग्स. बोलती हाँ ये ठीक है तुम्हारा, एग्स उसका पहला स्टेज है. देन दे चेंज एंड डेवलप एंड बिकम लावा, so lava, that small wriggly thing, worm like thing, after eggs. Okay, right? And then what happens after they become a larva? Larva is one stage ना, कीड़ा का एक स्टेज है कि कीड़ा बना नहीं है, वो worm type का होता है. और then she asked, yes सुनील, उसके बाद क्या होता है? पहला तो एग्स है, फिर अंडे में से वो लावा निकलता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? शी इज आस्किंग सुनील. And then Sunil says they become adults. 3 words he says, they become adults. Then the teacher says, yeah, they all become adults, but there is a step missing. Okay, what is the step between, larva and adults? What is that stage in the life cycle? That is what she's saying. Okay, so then, then somebody else says, then this one, Suresh says, lava ke baad kya hota hai? Maybe it's called matured lava. Then the teacher says, oh, there are 2 kinds of lava in the life cycle of some insects. But what I was thinking was that what had happened before that become adults. And she asked another student, and what do they become? So then she says that no, I don't know. How do they come from lava? Now, ये जो पूरा, पूरा जो अगर ये discourse है classroom का, ना अगर अब मैं आपको बोलूं कि ये 5 मिनट का डिस्कोर्स जो है, अगर आप इसको एनालाइज कीजिए, आई वांट यू टू एनालाइज दिस डिस्कोर्स. नाउ टीचर्स के कितने वर्ड्स थे, स्टूडेंट्स के कितने वर्ड्स थे, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स ये था? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू. हाउ मेनी वर्ड्स? जस्ट एनालाइज दिस. आपने लिखा नहीं है, but you get an idea. Teachers, this was dominated by whom? By teacher. हाँ, तो who spoke more words? Teacher. आपको क्या लगता है? Yes, all of you. This 5 minutes discourse. Yes. Who spoke Yes, more ma'am. words? Teacher. Yes, ma'am. Teacher spoke more. Teachers, ma'am. Teacher. Teacher was emphasizing more on student to answer.
ma'am. Hello. Hello. Ma'am, you are not audible. Ma'am left. हाँ मैम लेफ्ट हो गई कुछ आएंगे मैम वेट करते हैं अरे वो अंजलि मैम का असाइनमेंट किसी ने सबमिट किया क्या? नहीं मैंने तो अभी नहीं गूगल किया पे करना है। है ना जब तक पीआरएन नंबर नहीं आएगा अरे लेकिन एक्चुअली पीआरए मेरा नंबर तो अभी के लिए दिया पड़ा नहीं पीआरएन है। नंबर आएगा तब ना इसलिए हाँ नहीं अभी करना है आया अभी नहीं है। Guys, ma'am asked to join again quickly. Message भेजा है. Do we have to left now? यस यस Yes. मैम ने ऐसा ही मैसेज भेजा है। ओके ओके तो ज्वाइन कहाँ होना है दिव्या? यहीं पर इसी लिंक पर फिर से। You will send another link. Hello. हाँ You will send another link. काउंसलिंग में ज्वाइन होना है अभी सब यहाँ से निकल क्यों रहा है आ रहे हैं फिर वापस भी तो आ रहे हैं। मैं तो वापस ज्वाइन हुई ठीक मैं तो डर गई यार दूसरी कोई लिंक आई यार नहीं आई थिंक इसमें ही आना है मैम बोल रही है जल्दी ज्वाइन करो हम तो यहाँ पे है ही हाँ मैं तो यार मैम को वापस बोलो एक लिंक कि हम तो कब से ज्वाइन है जो यार। मेन लिंक आई है ना जो मेन लिंक आई है ना उसमें ज्वाइन करते हैं वापस से लेफ्ट होते हैं और मेन कौन सी है यार? ग्रुप मेन वाले यही तो ओके लिंक है। ओके बीएड वाले ग्रुप में आई है ना फॉर्मल ग्रुप में उसमें ज्वाइन करते हैं उसी में किया है ओके जिसी में आया हो वापस। ओके हाँ वही है सेम टू। अच्छा वही है क्या उसी में करके इसी ग्रुप में आए हो वापस। मैं ओके तो मैम तो क्या यहाँ हो नहीं रहा है है मैम कम हो रहे हैं बच्चे बच्चे कम हो गई ना, ऐसे ही कौन पढ़ा रहे हैं। चलो दूसरे लिंक पे जाना है मुझे तो नहीं लगता इसमें आना है कोई लिंक सब है? कम हो दूसरी रहे हैं लिंक है कोई? अरे दूसरी लिंक फॉर्मल में अभी एक रिसेंटली नहीं लिंक आई है शायद मैम ने न्यू बनाई हो पता गाइस नहीं हाँ हाँ मैम ने आइए नई आइए जो मीटिंग बनाई है ना उसमें ज्वाइन हो जाओ। हाँ मैं वहाँ पे वही मैम बोल वेट रही कर थी रहे हैं। ओके 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 चलो
discourse used more words, okay? That is absolutely right what you're saying. And an analysis was done in this discourse, and it was seen that the teacher has used 190 words, okay? 190 वर्ड्स का टीचर ने इस्तेमाल किया. And it's a long discourse. I'm not पूरा मैंने आपका नहीं दिया, I just took a part of it. And students have only used 11 words, okay? So that means in this classroom discourse, 94% of the discourse was done by the teacher. So ये जो है discourse, and this is what I find, most of us अगर हम classroom में जाएं तो हम लोग को क्या दिखता है that this is what we find here, that most of the time what we find is that teachers are all the time talking in the whole discourse, and students do not get opportunity to express themselves and their ideas, their thoughts, their perspectives. So that is a tragedy. ये बहुत दुख की बात है that this happens. So even in this discourse, if you see 190 वर्ड्स जो है टीचर ने इस्तेमाल किया, 11 शब्द स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया, and so 94% of the discourse time was actually spent by the teacher. So that is so this is not what we want, so this is the whole problem that is happening. बार मत जा काम कई देवल कर बार हम झाल देवल कर. So this is please mute please. And so this is what we actually find, and this is not what we want in a classroom discourse. So I thought that this was a very good example by which you understand, what it is. And here I want to support this by a research study also. This Flanders, you may not have heard of this name. Flander was actually a researcher, and Flander in 1970 उसकी एक research finding है interaction analysis पे. Flander ने बहुत काम किया है classroom में interaction कैसे होता है teacher student के बीच में, उसका जो analysis है Flander ने जो है इस पे बहुत research किया है. And so when we talk about classroom analysis, we also talk about Flander's work, FLANDERS, Flander. So Flander's research, he made one very interesting finding, which I really want to share with you. And this you can take down, this finding, because this will help you to understand and even support your answers, when you write. Flander in 1970 reported, that teachers of, I'll repeat, Flander in 1970 reported that teachers of high achieving students, now these words are very important, that teachers of high achieving students, teachers of high achieving students spent about 55% of class time talking. So teachers of high achieving students spend about 55% of class time talking, compared with 80% of class time for teachers of low achieving students, okay, compared with 80% of class time for teachers of low achieving student. What does this mean? क्या मतलब हुआ इसका? कि क्या research था? So what I'm saying, it is not that I'm saying, okay, एक चीज याद रखिए, academics में, theory में, थ्योरी कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि उसमें रिसर्च किया गया है. प्लीज म्यूट, किसका म्यूटेड नहीं, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, समवन इज नॉट म्यूटेड. ओके, सो आप हमेशा याद रखिए कि रिसर्च का एक फंक्शन है थ्योरी बिल्डिंग ऑल्सो.
बहुत सारे रिसर्चेस इसलिए होते हैं कि उसमें से थ्योरी बिल्डिंग हम कर सके, एक हम नया थ्योरी को इवॉल्व कर सके. Okay, that's a very important function of a type of research that people do. So हर research में theory building नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे researches में theory evolve होता है और theory building होता है जो हम पढ़ते हैं. That is what you and me are studying. So it's very, very important to understand, that कि जो हम पढ़ रहे हैं, it is not that कि madam is saying so it is true, it is not that I am saying कि teachers को ज़्यादा students के साथ interaction करना चाहिए, learning will be more, achievement will be more. I am not saying. This is all based on research. ये हमेशा याद रखिए आप. So theory भी जो आप पढ़ते हैं, there is evidence. It is based on research. और ये अगर students high achieving हैं, स्टूडेंट्स का अचीवमेंट बेहतर है, स्टूडेंट्स का अचीवमेंट हाई है, उनका रिजल्ट बेटर है, उनका लर्निंग ज्यादा है, तो क्लासरूम इंटरैक्शंस में क्लासरूम में टॉकिंग टाइम में teachers have spent only 55% of the class time. So students में ज्यादा learning हुआ है और ज्यादा achievement हुआ है. But on the other hand, जो low achieving students है, जो low achieving students है, उनमें how much time teachers have done in talking? How much time did I say? 80%. 80% of the time. So you see yourself. See what the research is saying. कि जो low achieving student के teachers है, उनमें of course there could be many reasons. This may not be the only reason, but then this is also one important reason. That जो low achieving students हैं, देखिए उसमें teachers का talk time कितना है, how much talking time they have spent. Okay, the class time in talking is 80%. So teachers are talking 80% of the time, and their students में learning इतना नहीं हुआ है compared to those classrooms जहाँ teachers ने only 55% of the talking time, class में talking time अपने class में बातचीत की है, या classroom discourse में teachers का participation कम रहा है, 55% रहा है, and more more students have participated and more students have been involved, और students का engagement जो है ज़्यादा रहा है classroom discourse में. So this is a very important point, in classroom when we are talking about classroom, language proficiency. So this is one point which I felt was extremely important when you're talking about, language skills that we are talking about. Now, so naturally, language proficiency के लिए in whatever subject, language proficiency does not only happen in language. That you should be very clear, because language improvement, और अलग-अलग subject का अपना एक language है, which in Unit 1 we have emphasized, and that is why this course is called Language Across the Curriculum. That means all subjects of the curriculum, not only language like Hindi or Gujarati or Sanskrit or English. Language is important, in every subject of the curriculum, and every subject has its own words and its own language. And so that is why you have to give opportunity for students to express themselves, और classroom discourse जो है, teacher का जो words है, that is why I give you the example, where the teacher is asking about insect का life cycle, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा बोल रही है and explain कर रही है, और students का जो participation is only 11 words, if you count that interaction, उसमें students का खाली 11 words, और 94% of the time teacher ही explain करती जा रही है, and questioning skill is not, probing skill and questioning skill इतना strong नहीं है जिससे students can answer. Now, so this was your second function of classroom discourse, that is, improving language skills. Now, have you all understood this? Yes. Yes, ma'am. सब लोग
Any doubts in the second function of classroom discourse? No, ma'am. किसी को कुछ भी No, ma'am. doubt है? Please do ask me, you know, because we are 85 attendees here. So anyone, and I want to ask especially those students जिनको English समझने में थोड़ी परेशानी होती है, are you able to understand my language? Yes. Yes, those students जिनको English समझने में थोड़ी सी भी परेशानी है, you know, that is why I'm speaking a lot. I'm being bilingual. दोनों language हिंदी and English में I'm speaking. So those students जिनको English समझने में थोड़ी सी परेशानी है, please speak up. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Please speak up, please, so that I know. Yes or no? Where are those students? Because some students told me in that. हाँ, बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए. यस मैम, समझ आता है आप जो बताती हूँ. हाँ, समझ में आ रहा है. जिनको भी इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी है, क्या उनको जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ समझ में आ रहा है? जी मैम, आप हिंदी बोल रही हैं तो हमें समझ में आ रहा है मैम. ओके, गुड. ओके, अगर नहीं आता है स्टॉप मी, ठीक है ना? स्टॉप मी देयर. हाँ, I will repeat. So see, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, because अरे तो लॉस आपका है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ आएगा, so then you will not be able to, you know, write. So कोई भी है जिसको इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, दैट इज द रीजन, you know, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आई शुड रिपीट, प्लीज टेल मी, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है यहाँ पे. Because you know you might have multiple choice. I don't know in April क्या situation होगा and क्या होगा अगर online exam होगा, तो it is going to be multiple choice. So we have to be prepared for both. You know, so conceptual clarity बहुत important है, you know, यहाँ पे. And so I'm doing a lot of discussion. That is the reason, you know. So I feel that's very important. I think the time is up. Just please wait for 1 minute. Let me download your attendance sheet. Okay. Okay, thank you. Now we'll meet on Tuesday. Okay, thank you so much. धन्यवाद मैम. ओके, धन्यवाद आपको भी. थैंक यू मैम. ओके.